My dear students, myself Debashis Saha as a social teacher, Oriental Public School, Kishanganj. Today I teach you class 5, subject social, chapter 11. Today my topic is age of machines, industrial revolutions. चलिए बच्चे, आज हम लोग क्लास में एज ऑफ मशीन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं औद्योगिक क्रांति। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान से सुनिए, कहीं कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। एवरी डे वी यूज़ द मशीन विदाउट इवन thinking about it. A machine is anything that helps make our work easier. They need to use their weapons, hunting, fishing, etc. led human beings to make tools from materials like bones, wood and stone. मशीन के आविष्कार हो जाने के बाद कोई भी काम आसान तरीके से कर सकते हैं। बहुत कम समय में कोई भी काम को अच्छे ढंग से हम लोग कर पाते हैं। The wheel has always been considered a major invention in the history of the mankind, but it really would not work as well as it does. The wheel has always been considered a major invention in the history of the mankind, but it really would not work as well as it does had it not been for the axle. An axle is a rod of poles centered in the wheel that allow the wheel to turn around it. The early man used to stone and stool. So this period was named the Stone Age. पुराने ज़माने में कुछ लोग स्टोन एज का ये करते थे, स्टोन का इस्तेमाल को युग को कौन युग करते थे? स्टोन एज। द एज कंटिन्यू फॉर सेवरल ऑफ 1000 years and gradually the first started the making tools from the copper and from the bronze. However, these metals were soft and bent easily. The next major discovery, दूसरा मेजर डिस्कवरी क्या था? आयरन। उसके बाद कौन चीज़ का आविष्कार हुआ? आयरन का। द डिस्कवरी ऑफ आयरन हैड फॉर रीचिंग द इफेक्ट्स ऑफ द रिप्लेस द यूज ऑफ कॉपर with that of iron. Iron is a very strong and durable metal. Iron is a very strong and durable metal. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस से पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। इट कैन बी यूज टू मेक ए टूल्स फॉर कटिंग डाउन ट्री एंड द क्लियरिंग द फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। प्रेजेंट एरा इज नॉन एज द एज ऑफ मशीन। इसको किस युग के जानते हैं? मशीन युग के नाम से जानते थे। टुडे माय नेक्स्ट टॉपिक इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, कहीं कोई दिक्कत होने से लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट स्टीम इंजन वाज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय थॉमस सेवर इन द 17th century, but it was a form being a practical working models. James Watt took up in the initiative and built a refined the versions of the steam engines in England in 1769. फर्स्ट स्टीम इंजन का आविष्कार कौन किया था स्टूडेंट्स? थॉमस सेवर। कितने सेंचुरी में? 17th century में। देन फॉर्म बीइंग ए प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल, James Watt took up in the initiative and built refined the version of the steam engine in England in 1769. The power to drive the steam engines was provided. The power to drive steam engine was provided by coal. It led to the more machines being used working on the same principle. The steam engine was initially used for mining purposes, but that soon became the heart of many later industrial age of inventions. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते। इन एडिशन टू बीइंग extensively used of the motorized vehicles, this steam engines also powered machines in various short of the factories, even the steam turbines we use today. The next point, that generated electric energy is the thermal power plants and inspired by the steam engines designed by during the industrial age. The next topic is industrial revolution, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? औद्योगिक क्रांति। चलिए इसके बारे में क्लास में जानकारी प्राप्त करते हैं। कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें। पढ़ाई को जारी तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। With the use of the machines, goods could be produced in large quantities in much less time. This mass produced goods were the cheaper and more durable and of the better quality. The increase in demand for these goods led to the beginning of the steam factories produced goods in large quantities. People left the rural areas to work in the factories that were located in cities. This revolutionary change in the system of the production from handmade goods, मानव द्वारा निर्मित, and machines made goods, जो मशीन के द्वारा निर्मित, was called the industrial revolutions, जिसको हिंदी में कहते हैं औद्योगिक क्रांति। A major breakthrough came with the invention of the rotary printing press, designed and developed by the Richard Marchway in 1843. Then it was the momentous steps in the history of the printing as an industrial scale for the reading and newspaper could not have been accomplished without their
innovations. Source of energy. Earlier, the main sources of energy were wind and waterfalls, and later coal the well began to be used. Coal, अब discuss करेंगे coal कोयला. Coal was the among the first fuel to be used. Even today is the major sources of energy. It is the fossil fuel found under the earth's surfaces. Then well, mineral well like coal is also fossil fuels found under the earth's surface. The crude oil is the refined to produce the petrol and kerosene. Fossil fuel are limited energy sources and also causes of pollution. The next topic is electricity. Electricity is divided from the coal, oil, gas, and water power is to another. And sources of energy, it is the most widely used sources of energy and present. It is the main sources of power for present day machines and appliances. An American scientist Benjamin Franklin suspected that lighting was the an electrical current in the nature, and he wanted to see it and if he was right, he flew a child's kite on a cloudy day during the lightning and the thunderstorm. To this kite, he had to attach to a strong wire, and the other end of the wire as were tied to a key. Then, with lighting occurred, they experienced a shock of the touching and the key. The proved Benjamin observations and led to the discovery of electricity. किसका आविष्कार किया इलेक्ट्रिसिटी कौन किया बेंजामिन फ्रैंकलिन his famous astronomy kite flights in June in 1752 led in him the develop many of the terms and that we still use today when we talk about the electricity battery conductor condenser charge discharge uncharged negative minus plus electric shocks and electrical ladder on the new device and the engines were developed. अब बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें पढ़ाई को जाए तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक विंड एनर्जी विंड इज द आवर इन is air in motions. Wind energy is produced by the uneven heating of the earth's surface by sun. Force of the wind is used by run windmills, which is the run machines to produce electricity. Wind is the clean fuel, and wind is farm produce no yet no water, no pollution, water pollution because no fuel is burned. Wind is the renewable fuel because it use solar energy. Solar energy is the sun ray that are the rich earth. This energy can be converted into heat and electricity. It can be used to heat and water for use in homes, buildings, and swimming pools. To operate a turbine, generated electricity, or to light up homes and power domestic electrical appliances. It does not produce a pollution and it is renewable. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देंगे आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल चैप्टर एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में डिस्कस किया इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन के बारे में आप लोग के पास डिस्कस किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सोर्सेस ऑफ एनर्जी कोल वेल इलेक्ट्रिसिटी wind energy solar energy some important points a machine is anything that helps work easier the discovery of iron replaced the use of copper with that of iron the first steam engine was designed and developed by Thomas Savery in 17 फर्स्ट स्टीम इंजन का डेवलप कौन किया था थॉमस सेवरी इन कितने सेंचुरी में किया 17 द इन रिवोल्यूशनरी चेंज द सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन फ्रॉम द हैंड goods to machines made goods and called the industrial revolution. Wind is renewable because it is a solar energy which is unlimited. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें कहीं कोई दिक्कत नहीं हु आर द फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द फर्स्ट टेलीफोन in 1875. A passenger ferry is the Sydney Harbour, Australia called the solar sailor and run out wind or battery. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को औद्योगिक क्रांति के इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में डिस्कस किया इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन के बारे में मैंने ये आप लोगों को बताया उसके बाद मैंने सोर्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया वेल के बारे में हम लोग डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी तो एक चीज़ और हम लोग विंड इज एयर मोशन विंड इज एनर्जी इज द प्रोड्यूस्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय सन द फोर्स ऑफ विंड इज यूज फॉर रन विंड मिल्स विच इज इन टर्न run a machines or produce electricity. Wind is a clean fuel. Wind farms produce no air or water pollution because no fuels is burned. Wind is the renewable fuel because it is solar energy. Solar energy is the sun ray that reach earth. This is the energy can be converted into heat and electricity. It can be used for the heat and water for use in the home buildings or swimming pools to an operated turbine of generators
electricity or the tied to light to homes and power domestic electrical appliances. It does not produce air pollutants as is the renewable. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत हो सके हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें. स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.